Jai Hind student, welcome to English class. Students, here in this lecture we will speak about definite articles. In the previous lecture we have started the topic articles, we have seen the definition of the article and we have also discussed about the types of article. Now let's see what are the rules for using definite article. When we can use the definite article. Now, the, as we all know, is used to give information about particular noun or anything. So, the is a definite article. Okay. Now, the, it can be used with uncountable nouns also, or it can be used with non-uncountable nouns also. For example, she liked to sail over the water. So, here some specific body of water is being talked about. The first thing is that she liked to sail over the water, means some specific water body she liked to sail on that. ठीक है. The second thing, you have seen that water is an uncountable noun, so we have used the. So though the signifies some particular thing or particular function, particular person, but it can be used with both countable or countable or non-countable noun. She liked to sail over water. Now here just see the difference. If I have written she liked to sail over the water, then I am talking about some specific water body. But here I have the next sentence you can see, she liked to sail over water. That means कि no particular water is being talked about. It can refer to any water. She likes swimming. ओके अब स्विमिंग जो है हम किसी भी वाटर में करें, इट्स लाइक दैट. अब हम स्पेसिफिकली मेंशन कर दें कि हाँ कि इन सच टाइप ऑफ वाटर, देन इट विल बिकम अ द. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हेन टू यूज द. what are the rules for using article the. Now the first is use the after you have talked about it the first time. That means whenever we are talking about anything for the second time, then we specifically use the in order to indicate कि now we have already talked about this and again we are emphasizing on the same thing. ठीक है. For example, this is a dog. Okay, this is the first statement. I have passed the first statement, that is this is a dog. Okay, now the second statement is the dog is brown. Now ये dog है. Now this dog I have already spoken. Now अब हम इसको फिर से इसी डॉग के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं अबाउट द कलर, कि इस डॉग का कलर क्या है, ब्राउन. सो वी विल यूज द आर्टिकल द, कि द डॉग इज ब्राउन. Now next, use the when the person you are talking is already, when you are talking to already knows what you are talking about. Okay, so this is the second rule कि we use the when you are talking, means हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी सेकंड पर्सन है वो ऑलरेडी जानता है उसके बारे में पहले से कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द बैंक. There is someone knocking at the door. It must be the computer repairman. So here you can see we have used the I am going to the bank. So I am specifically going to a specific bank. किसी हम जनरल बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक प्लेस बता रहे हैं कि हम इसी जगह मैं जा रहा हूँ. ओके, देयर इज समवन नॉकिंग एट द डोर, कि देयर इज समवन नॉकिंग एट द डोर. डोर पे कोई नॉक कर रहा है एंड दैट person is the computer repairman. Next, use the when you talk about general places in nature like lake, the mountain, ocean, the beach. So when we are talking about these things related to nature, lake, mountains, ocean, beaches, rivers, then also we use the. Let's go to the beach. I love to camp in the mountains. Next, use the when you are talking about something that there is only one of and everyone knows about it. That means universal truth की अगर हम बात करें. Okay, और या फिर we are talking about something that there is only one of
एंड एवरीवन नोज अबाउट, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है, सब कोई जानता है. फॉर एग्जाम्पल द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स. सो हेयर एवरीबडी इज फेमिलियर विद दीज हेवनली बॉडीज, सो वी यूज द. फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑन द अर्थ, द स्काई इज सो ब्यूटिफुल टूडे. So these are the few rules when we use the. Now let's talk about in geography. Geographical patterns की बात करें या geographical features की बात करें. So there are many features and with them we use the. For example name of most countries. कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम जो है द यूज़ करते हैं. द नीदरलैंड, द डोमिनिकन रिपब्लिक, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स. Then names of cities, town or state. Okay, sorry. Now here we will see कि in this slide कि when we don't use the, ठीक है, द इन केस ऑफ जोग्राफी या फिर हम जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें किसके साथ हम द यूज़ नहीं करते हैं, इस स्लाइड में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किसके साथ द यूज़ करते हैं. ओके, डू नॉट यूज़ द बिफोर, किसके साथ हमें द नहीं यूज़ करना है, नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नेम के साथ. फॉर एग्जाम्पल as you can see in the example India, Brazil, Canada. Okay, so we don't use the with most of the countries. Next, the we don't use the with the name of cities, town or state. For example Toronto, Delhi, हम द Delhi नहीं बोलते हैं, द Toronto नहीं बोलते हैं. Name of streets, okay, Callowville Drive, Park Avenue or any chalk, any street, any area. If we are indicating, we don't use the. Name of lakes and bays, Lake Michigan, Lake Ontario, except while referring to a group of lakes. ठीक है, तो हम जब किसी सिंगल लेक की बात करते हैं तो हम उसके साथ द नहीं यूज़ करेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ लेक्स, द ग्रेट लेक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मीन्स जिसमें बहुत सारी लेक्स की हम बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ द. देन नेम ऑफ माउंटेन की बात करें, माउंट एवरेस्ट, माउंट फ्यूजी. नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप. नेम ऑफ आइलैंड्स, ओके, ग्रीनलैंड, लाइक माउई, ईस्टर आइलैंड. सो वी डोंट यूज़ द विद ऑल दीज थिंग. नाउ अब किसके साथ द यूज़ करते हैं, नेम ऑफ रिवर्स, ओशन एंड सीज. द गंगा, the Brahmaputra, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. Okay, point on the globes, the equator, the South Pole, the North Pole. Okay, then geographical areas, the Southeast, the Asia Pacific. Then with desert, forest and gulfs. For example the Kalahari Desert, the Atacama Desert. Okay, then the Sundarbans. With all these geographical features we use the. Okay, so I hope this much clarity is enough to make you understand when to use the and when not to use the. Okay, so this is all about the definite article the, its usage. Now in the next lecture we will discuss about indefinite articles, what are the rules of using them. Okay, so this is all student. Thank you everyone.